नमस्कार दोस्तों and welcome to SM Smart Profile Bank Nifty and Nifty Analysis for 23rd January 2026। फ्रेंड्स ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो चार्ट्स को यूज करते हैं। प्रोबेबल एरियाज ऑफ एब्जॉर्प्शन, एग्जॉशन, ट्रैप्स एटसेट्रा देखते हैं। हम ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल को कंबाइन करते हैं एक बेटर एनालिसिस और व्यू के लिए। फ्रेंड्स, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं और हम किसी भी टाइप की ट्रेडिंग एडवाइस या ट्रेडिंग टिप्स नहीं देते हैं। प्लीज वॉच दिस वीडियो ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग अबाउट मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो। फ्रेंड्स, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे एक क्वेश्चन एंड आंसर्स का ग्रुप भी है, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो के बारे में सीखिए। Now friends, having said that, let us come to the analysis of the current day, that is 23rd 22nd of January। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि 23rd जनवरी को क्या probabilities हमारे सामने है। Now let us see what is the opening context। हमारे पास आज क्या हुआ, एक गैप अप ओपनिंग हुई। इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं ताकि आपको ये ठीक तरह से नजर आए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी स्प्लिट इट, हियर इट इज। तो आप ये देखो, ये यहां पर हमें ओपनिंग मिली। कल की क्लोजिंग कहां थी? कल की क्लोजिंग इधर थी, तो हमें एक गैप अप ओपनिंग मिली। ओपन कहां हुआ? इस रेंज के अंदर हुआ है, यहां पे खुला है, तो इट इज वेल विद इन दिस रेंज। अब सिंस ये प्रायर डे वैल्यू में खुला है, is it a balanced day or is it an imbalanced day? Because it is a gap up. So even if it is a gap up and it is opening within the range, so we will not call it a imbalance regardless of the magnitude of the gap, right? If the opening is within range, then it is a balanced opening. For a balanced opening, what is more important is the location. The location is decisive. The gap magnitude is not important. अब अगर हम हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट देखें प्रीवियस डे का, तो इस दिन हमारे पास हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट क्या था? प्रीवियस डे का हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट हमारा बेरिश था। हमारे पास ऊपर कोई एक्सेस नहीं था, एक पुअर हाई जरूर बना था, बट देयर वाज नो एक्सेस। एक वीक स्ट्रक्चर बना था। नाउ दिस इज नॉट अ टेल, आई वुडंट कॉल इट अ टेल, आई वुड कॉल इट अ वीक स्ट्रक्चर व्हिच नीड्स टू बी रिपेयर्ड, राइट? सो एक ये वीक स्ट्रक्चर लेफ्ट बिहाइंड हुआ था। मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे, लोअर एरियाज पे एक्सेप्टेंस के बाद ऊपर गई थी। सो दिस वाज अ रिस्पॉन्सिव बाइंग, देयर वाज नो इनिशिएटिव बाइंग सीन ओवर हियर। आज का ओपन किस टाइप का था? टुडे वाज एन ओपन टेस्ट ड्राइव। मार्केट खुली है, उसने निचला एरिया थोड़ा सा टेस्ट करके इट वेंट ऑल द वे अप till the POC of 20th January. As soon as it touched the POC, इसको यहाँ पे एक opposite activity मिली, price reject हुई and the market came down all the way to the POC of the previous day. जब भी मार्केट ओपन होती है, एक टेस्ट रेफरेंस को टेस्ट करती है एंड वहां से फिर रिजेक्शन मिलता है, द मार्केट एडवर्टाइजेस this reference as an unfair price. So this established early responsive selling. अब AB में हमें क्या मिला? AB पीरियड में रिस्पॉन्सिव सेलर्स हमारे को मिले 20 जनवरी के POC से। हमारे को यहां से एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, फेलियर ऑफ अपसाइड कंटिन्यूएशन हुआ है। जब मार्केट नीचे आई सी डी ई एंड एफ पीरियड में, वहां पे वन टाइम फ्रेमिंग हुआ, देयर वाज नो रेंज एक्सटेंशन, देयर वाज नो रोटेशन एक्सेलरेशन सॉरी, एंड द रोटेशन फैक्टर जो था वो सिर्फ -2 था। सो दिस वाज नॉट एन इनिशिएटिव सेलिंग। अब हम अगर डी पीरियड देखें ऑफ द प्रीवियस डे स्ट्रक्चर, तो इसके बारे में
what do we say? It has multiple TPO prints. Because single prints कितने हैं? But is it an excess? No, it lacks a clear excess tail. Rather, this is a structural weakness. यहाँ पे अगर मैं volumes check करूँ, the volumes are not low. So weak references matter only when price returns to them. यहाँ पे price वापस आना चाहिए, तभी ही ये एक weak reference जो है establish होगा. बट आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोई डाउनसाइड अर्जेंसी नहीं दिखी. द मार्केट स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम in this value area, and that is very important because time spent is very important as far as market profile is concerned. और यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, but it did not touch the value area low of the previous day. It did not repair the weakness in the D period of the previous day. And when it spends time in the value area, why I say it is more important? Because as per market profile theory, time is more important than the price. And when the time spent is more, what does it mean? It means that the sellers lacked conviction, the buyers were not initiative, and the market agreed on a fair value. So therefore, this day is a balance repair day. I would not even like to call it as a neutral day. It's more of a बैलेंस रिपेयर डे. अब आज के डे टाइप की डायग्नोसिस भी कर लेते हैं. रोटेशन फैक्टर हमारा -2 है. एक प्रॉपर रेंज एक्सटेंशन तो मुझे नहीं मिली है क्योंकि 1 IB भी नहीं था. तो आई वुड नॉट कॉल इट अ वेरी गुड रेंज एक्सटेंशन ऑन द डाउन साइड. कोई मुझे एक्सेस मिला नहीं मिला. ये बी पीरियड जो है, I would not call it an excess because the price, once it did come back, it did return. So this I would, instead of naming this as a tail, I would rather call this as a structural weakness. वैल्यू हमारी कैसी रही, मैंने अभी आपको स्प्लिट करके बताया था कि सारी वैल्यूज जो थी ओवरलैपिंग थी, राइट. और क्लोजिंग हमें कहाँ मिली? क्लोजिंग हमें ये मिली है वैल्यू एरिया हाई के ऊपर. डे टाइप मैंने अभी आपको बताया, एक न्यूट्रल टू नॉर्मल डे था, एक बैलेंस डे था, एक थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है. क्या कंट्रोल शिफ्ट हो गया है सेलर से? आई रियली वुड नॉट लाइक टू एग्री ऑन दैट. But close is above the value area high and without any range extension and without any initiative buying. So when a close happens outside the value area or the VAH, and there is no excess also, it means that this is not directional, this is informational. That means tomorrow also we may be looking for a balance attempt rather than a big move here and there. Control summary अगर मैं देखूं तो sellers failed. They gave a response in the B period. Buyers lacked initiative. Market जो है, it ended in a temporary balance resolution upward. And one more important point is that now the HTF shifts. HTF मतलब higher time frame. It shifts from bearish to neutral. अब implications क्या है 23rd जनवरी के? probability क्या है? I've already discussed this probability with you in some other videos also, right? Well, there are 5 types of probabilities: opening within the value, above the value area high, below the value area low, a big gap up, a big gap down. So tomorrow we will see how it happens. Do we get opening here and we see a two-way trade, or do we get a gap up opening above the value area high and then we test for the acceptance, or below the value area low and we look for rejection if it has been accepted or no, or a big gap up and a big gap down, which we by now know how to deal with. So having said that, friends, let us wait for tomorrow.
And the order flow charts are always with you. You know how the buyers and sellers are going to react. It is the order flow and market profile charts. If you combine together, it's a very good learning tool, right? Which helps in minimizing the risks. So when you trade, always remember define your risk before you define your profits. And let's meet with the next video maybe next week. Till then, goodbye and see you all.